The question is, two point masses each equal to m are placed at a distance to a pot. Show that a small mass m placed midway between them on the line joining them will be in equilibrium, and if it is slightly displaced from this position along the line perpendicular to the line joining the masses, it will execute simple harmonic motion. It will execute simple हार्मोनिक ऑसिलेशन. ओके, ये ध्यान में रखना है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन. चलो, अब क्या करना है, ये यहाँ पे दो मासेस अपार्ट है ना. सो ये ऐसा है बेटा, ये m है, ये भी m है. सो मिडवे बिटवीन देम है ना. So midway between them, right? So इसका क्या है, इसका मास इज मास m है. सो यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है ना. और ये डिस्टेंस हमको मालूम नहीं. सो x मान के चलो. अभी ये m, कैपिटल M, ये स्मॉल m के ऊपर फोर्स एग्जीक्यूट करते. सो इसको ऐसे अलाइन करो, और ये कैपिटल M दूसरे तरफ से जो m, ये भी स्मॉल m पे एग्जीक्यूट करता. So now this angle is theta, and of course this angle is also theta. Now how much force is going to be executed? So this force is, look at this force is, this force is resolving into two component. One is along over here, ये f sin theta, ये f cos theta है ना. ये भी f sin theta, इस तरफ अगेन f cos theta है ना. सो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये f sin theta गेट्स कैंसिल. सो नेट फोर्स कितना होता बेटा? सो नेट फोर्स, इफ आई एम गोइंग टू राइट, f net is equals to minus 2f cos theta. Why minus? Why? Because see, from here, if I am going to consider this as positive, है ना, so from here it is going to be getting down, so therefore it is negative. So sign convention, negative, f net is equals to minus 2f cos theta. And moreover, see, x is very less than a, ये ध्यान में रखना है, very less than a है ना. x is very less than a. Now slightly distance बोल रहे, so that is the reason I am considering this as x is very less than a है ना. So now ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा, यहाँ पे SHM एग्जीक्यूट हो रहा. so our main intention is क्या लिखना है, f is equals to ma and acceleration is equals to what, minus omega square x तक लेना है. so वही हमारा इंटेंशन. अब देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस कितना होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस. सो अब लिखना है -2 है ना. सो एफ इज इक्वल्स व्हाट, जी ग्रेविटेशनल फोर्स m अपॉन m अपॉन रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर into cos theta. Cos theta is what, adjacent by hypotenuse. So adjacent बोले तो x upon root under root x square plus a square, under root x square plus a square. So अभी हम मिनिमाइज करें तो f net is equals to -2 gmm x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 है ना.
So if x is very less than a compared to a, x is very less than a. So therefore x square, therefore x square, x square is minutely, it is negligible. X square is going to be negligible. X square negligible. So therefore f net क्या होता बेटा, f net, so f net is equals to, f net is equals to minus 2 g m m x upon a square whole to the power of 3 by 2. So therefore it is going to be a cube, है ना. So as I told, f net is equals to what, m into a. F net is equals to m into a is equals to minus 2 g mm x upon a cube. So a m ka m gets cancelled. Now a is equals to, if I am going to compare with SHM बोले, so ये condition है, a is equals to minus omega square x. So omega square जगह में sorry, omega square जगह में 2g mm, 2g mx 2gm by a cube है, 2gm by a cube है ना. So now this is going to be written as, omega is equals to under root of 2gm by a cube. So omega is equals to 2 pi f. So f is equals to 1 by 2 pi under root of 2gm by a cube. This is your answer. Thank you.